Today is 11th of November, and this audio journal is for 10th of November. This is NS 810, and yesterday was like pretty exciting. So, what happened is it was going as a normal day, but there was this certain uh, thing happening in I don't know if I should go in details because I really want to be anonymous, but then again, uh, I don't think this much detail will mind. So there was this thing happening in Mathura, and the girl I used to I like was coming over there. So um, and this was an opportunity that I could go and meet her, and because it has been many months now, and I just really wanted to see her. But then again, it came to me as like all of a sudden that yes, 10th of it was 10th of November, and I don't know how to go there. All of a sudden, I have had no reservations for train tickets or anything, and obviously, I was not going to drive all alone to Mathura. That would be kind of wastage of money. Um so I was like तो मैं 1 बजे मैंने डिसाइड करा कल दोपहर में, एंड आई हैड टू रीच ओवर देयर अराउंड अबाउट 7 p.m. So at 1 I decided that okay, I'm going. And then it was pretty exciting because मैं निकला हूँ यहाँ से घर से 1 बजे मैंने डिसाइड करा है, तो बिकॉज जस्ट मेरे को कुछ काम करना पेंडिंग था, तो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट. सो इट टुक मी अराउंड 1 hour टू कम्प्लीट इट, एंड आई वॉज फ्री बाय 2 p.m. देन आई मैंने कपड़े वपड़े पहने, घर में बताया कि आई एम गोइंग समवेयर एंड आई विल बी कमिंग लेट. फिर उसके बाद देन मैं मेरे को निकलते निकलते 3:10 हो गए, एंड जो मैंने ऑनलाइन चेक करा था, माई ट्रेन वॉज लाइक 4:10. 4:10 की ट्रेन थी, एंड 3:10 पे मैं घर से निकला था, एंड इट इज़ प्रेटी फार फ्रॉम माई होम, द रेलवे स्टेशन इज़. So I was like, I don't know if I'll make it or not. Then I just ran. I took a bus to, first of all, to uh, a metro station. Uh, पहले इनको ये करने दो गली के अंदर. Then I took a bus. फिर वो I went to a metro station. Then from metro station, then I went to railway station. Then from railway station, I was like hodgepodging. It was I only had approximately 20 minutes to board the train. So I ran. अब मेरे पास टिकट तो थी नहीं कोई भी, तो I ran to the general coach के लिए. तो आई थॉट कि एक जनरल की टिकट ले लूँ, बट जब मैं जनरल की टिकट लेने गया तो वहाँ पर तो भीड़ मची पड़ी थी, मतलब लाइन बहुत. और तो मैं लग गया लाइन में, बट देन 4:10 की ट्रेन थी और मेरे को 4:03 हो गए थे उस लाइन में लगे लगे. ना बस लाइक कि अब मैं अगर इस लाइन में लगा रहा तो लाइन में ही लगा रह जाऊँगा, ट्रेन वहाँ पे निकल जाएगी. सो आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स विल सी व्हाट हैपन्स. मैं फटाफट वहाँ से भागा, एंड लिटरली मुझे 4:08 पे मैं प्लेटफॉर्म पे पहुँचा हूँ, पर मेरे को जनरल के डब्बे में जाना था. एंड it was absolutely at the end of the train. So I started to run. I was already running, but and then I started to run. I tried so hard and I just kept on running. It was just 1 minute pending, and literally I was like, इतना ज़्यादा I was मेरे को मैं पेट में दर्द सा होने लग गया और मैं भागे जा रहा हूँ, बट देन आई लॉस्ट इट एंड आई स्टॉप्ड फॉर अ सेकेंड, एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. सो एकदम से सामने से देयर वाज अ टीटी, एंड आई वेंट अप टू हिम एंड आई वाज लाइक आई डोंट हैव एनी टिकट. तो मेरे को जनरल के डब्बे में जाना था, तो मेरे को पेनल्टी काट दो जो भी है, एंड आई गो. तो उसने बोला तू चढ़ जा अभी ट्रेन में कटवा देते हैं. एंड देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, चल चढ़ गया, मैं बीच में ही चढ़ गया.
स्लीपर में, एंड देन देयर अनदर केम, वहाँ पे एक और टीटी आया, उसने मेरे को बोला था ठीक है बैठ, एंड उन्होंने मेरी पेनल्टी की टिकट काटी, एंड देन आए जैसे ही मैं बस चढ़ा ही हूँ ट्रेन में, एंड इन हार्डली इन 30 सेकेंड इट स्टार्टेड टू रन, सो इट वॉज लाइक अगर 5 मिनट, अगर 5 मिनट तो क्या, 1 मिनट भी अगर मैं कहीं पे पहले अटक जाता या रुक जाता तो आई वुड हैव मिस्ड इट, एंड उसके बाद कोई ट्रेन थी ही नहीं, सो आई वॉज ब्लेस्ड दैट मैं चढ़ गया, एंड देन आई हैड अ सीट। उन्होंने पेनल्टी की टिकट काटी, एंड देन आई वेंट टू मथुरा। देन मथुरा में it was near the place where I had to go. It was near railway station itself. So I we so there was this guy in train who was sitting next to me, and we had no conversation. But just before I was, deboarding from the train, so I asked him कि ये XYZ जगह कहाँ पे पड़ेगी. So he was like कि it is very near. I'll show you. And I was like okay. उसने बोला मैं जाऊँगा ही तो मेरे साथ ही चलना. So I was like ठीक है. तो हम बाहर तक गए. He was a resident of like there itself. सो उन्होंने अपनी बाइक निकाली, एंड इट वाज रिटन लाइक इंडियन नेवी ऑन द बाइक. सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, सो आप इंडियन नेवी में? सो ही वाज लाइक यस, बट एंड आई एम पोस्टेड इन president's house in New Delhi. And I was like okay. So he was like yeah, for 6 months we do over there, and then there's this Sena Bhavan, and I was like oh wow. So it was like it seems very wow, but it's a kind of a dangerous job. It's not that easy because matlab, it's I, it's president's house, so the security has to be tight and everything. So I was like yeah. So he dropped me where I wanted to go, and I was early. I was very early over there. मतलब मेरे को 7 बजे पहुंचना था, but I was like 6. That was like 6:15, and I reached Mathura. So that was pretty cool. So now what happened is that I had some time in hand. So I thought कि मैं दर्शन कराऊँ भगवान के. So there is this very famous temple in Mathura, Dwarkadhish ji. So I went over there. I went over there. अब वहाँ पे हुआ क्या कि I went by rickshaw, and सो आई डिड रिक्शा, एंड आई वाज लाइक कि भैया एक काम करना है यार, मेरे को लेके जाओ वहाँ पे, दर्शन कराओ, और मेरे को वापस यहीं पे लाके छोड़ देना, टेक दिस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मी. एंड ही अग्रीड टू इट, एंड आई वाज लाइक ओके कूल. अभी यहाँ तक तो ये बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि इसमें मैं क्या ही बता रहा हूँ, बट बताने वाली बात तो आगे बताता हूँ हुआ क्या. फिर वी वेंट ओवर देयर. मैंने उसको बोला जल्दी चल, बस जल्दी मेरे को पहुँचा दो, बिकॉज आई हैव टू रीच इन टाइम बैक हेयर. तो उसने ठीक है आप चलो. बस प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर रिक्शा उतारेगी वहाँ से यू हैव टू basically walk and reach to the destination for like the distance is at least 5 minutes distance. We talk distance in minutes. So उसने बोला 5 मिनट का रास्ता है, आप फटाफट दर्शन करके आ जाना, यहाँ पर मैं आपका वेट करता रहूँगा. लाइक ओके ब्रो, जाइयो मत कहीं पे भी, मेरे को लेट हो रहा है, तो वहीं पे खड़ा रहियो. एंड आई स्टार्टेड टू रन, एंड आई लिटरली स्टार्टेड टू रन, बट इट वॉज नॉट 5 मिनट्स. मतलब मैं लिटरली मैं पिछले 5 साल में इतनी तेज़ नहीं भागा. आई गेव इट ऑल, एंड आई जस्ट kept on running, एंड स्टिल 10 मिनट तक मैं भागता रहा हूँ, बीच बीच में रुक रुक के ऑफ कोर्स. तो मैं जाकर के मंदिर में पहुंचा हूँ, एंड इट वाज एब्सोल्युटली एटलीस्ट 3 to 4 आई डोंट नो 3 kilometers or maybe more inside that place. So then I went over there, I took darshan, pranam kara, and I immediately started to run back. And then again I had like I was like I फुल स्पीड पे मैं भागा हूँ और वापस आया हूँ. और जब मैं वापस आया हूँ तो मैं देखता रह गया, वो रिक्शा वाले मुझे नहीं मिला. एंड आई वाज लाइक दिस थिंग started to pinch me a lot, that I had to pay him at least some money, and because वो मेरे को लेके तो आया था, and now he's not there. He probably did not wait, or I don't know what happened, that he had to go, but he was not there. And I
because even when I was getting late, I just kept on waiting or seeing him here and there कि कहीं तो दिख जाए, because this is like something type of a burden that you have to pay him something, and you can't ought to just take this for granted कि चल ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है. No, and this is like this is not normal for me at least. So I kept on 10 minutes तक 10 मिनट तक I just kept on pondering कि वो कहाँ है. मैं देखता रहा इधर उधर है, but I could not find him. Then ultimately I had to take another rickshaw and went back to the place. So this was something which kept on irritating me for like, damn it man, कहाँ ही चला गया. मतलब मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, फिर ये दुख भी हो रहा था कि यार क्या ही मतलब हद हो गई है. उसको रुकना चाहिए था, या because I had to pay him something at least. Then nevertheless, what could I have done, because I did not know how much far the temple was inside, and I gave my literally the best whatever I could. I mean, this was the best I could. I ran so fast inside. I just That was the fastest darshan I ever had. मैंने इतनी जल्दी दर्शन करे. Otherwise I stay, and I just came back, and as fast as I could. So, एंड जाते वक्त भी मेरा ये दिमाग नहीं लगा यार मैं उसका फ़ोन नंबर ले लूँ और आई जस्ट गिव हिम सम मनी. आई थॉट ठीक है रुक जाएगा, मैं 5-10 मिनट में, उसने बोला 5 मिनट का फटाफट करके आ जाऊँ, आई बी फास्ट. बट then it just irritated me. Then I went over there, met everyone and met her too. And then but this something was and I met her. It was pretty nice, and that was very small meeting. And then I had this train back, so I left from there as well. Then मेरे को रात को like there was this train that has to come back to Delhi, so I went to uh, the railway station, and that train was late, so I was like hungry as well. मैंने तो खाया नहीं था कुछ भी, so I just took something from the railway station. And all of a sudden, and then again because I had no reservation tickets, so I just took a general ticket, and I was waiting on the platform. The train was half an hour due, so बैठा हुआ था. ऑलरेडी 10 बज रहे थे. एकदम से एक ट्रेन आई जो कि ऑलरेडी 5.5 घंटे लेट चली थी. फॉर मतलब दैट मीन्स कि 6 घंटे लेट चली थी, बिकॉज दैट ट्रेन हैड टू रीच दिल्ली एट 6 PM, और 10 बजे तो वो मथुरा आई थी. सो आई वाज लाइक, एकदम से मैंने देखा ये कौन सी, बिकॉज मेरे को तो पता नहीं था कि एकदम से यहाँ पर आएगी, कोई ट्रेन लेट चल रही होगी. एंड उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो दिल्ली जा रही है. एंड आई वाज लाइक ओके कूल. मैं फटाफट भागा. एंड आई वाज ब्लेस्ड कि जनरल के डब्बे में पूरा खाली पड़ा हुआ था, एंड आई हैड अ गुड सीट, विंडो सीट, एंड आई जस्ट सैट ओवर देयर. इट टुक 2 hours, एंड 12 बजे उसने एग्जैक्टली मुझे निज़ामुद्दीन उतारा. एंड देन आई वेंट आउट, एंड आई वाज लाइक कि and many years ago the same thing happened. I came from Mathura, and I remember that at that point of time I came very late, and by a bus. So I remember that is like 5 or 6 years ago. So मैं निज़ामुद्दीन पे ही था, and I was there was like this bus system, and that was pretty good. So रात को भी मुझे बस मिल गई थी that directly dropped me to my bus stand जो घर के पास है. then तो आई वाज लाइक कि ठीक है बस ही से ही चलेंगे. मेरे को नहीं पता था कि आजकल सिस्टम क्या बदल गया, क्या नहीं बदल गया. देन आई थॉट कि बस का सिस्टम तो ठीक है वही होगा. सो आई वाज लाइक वेटिंग, एंड देन नो बस केम. तो आई वाज जस्ट वेटिंग. एक बस आई कश्मीरी गेट की, देन आई टुक दैट. And then from there I was like I kept again for another bus, but that did not come. वहाँ पे आधे घंटे तो घूमता रहा मैं. Then there I did not find any bus when it was getting late, so I was like चलो ठीक है अब I should just take an auto or something. And then I came home. So I came home at um, around 1:30 a.m. So that was pretty exciting. I पूरे 12 घंटा बाद में वापस, 12 घंटा भी क्या जल्दी आ गया, because I left at 3. So in 10 and 10 and a half hours I came back from a long trip, and so much happened.
and it was pretty exciting to meet her and to have the darshan of Dwarkadesh ji. That little something, was like very, um, what do you say, irritating that वो रिक्शा वाला चला गया था, because I don't know if really if these things really matter for people, but certainly it is important to me. So that is something which was irritating me. But the rest of the trip was very fantastic, and finally, I started to feel like I'm getting back on the track, as to say that I used to be like this many years ago. Do things and go out and whatever I like to do. And then I, got very conservative and uh, fearful. Maybe I stopped doing things and everything, but it felt nice, alive. I ran a lot yesterday, and it was pretty great. So that's it. Then I slept around 2 a.m. in the morning, and I woke up really late now. So this is what happened at 10th of November, and that's it for today. I'll record another audio journal for tomorrow, rather मतलब टुडे, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह ही बना रहा हूँ ये पिछले दिन का, तो आज क्या होगा मैं वो कल बना के डालूँगा. So thank you for listening. If you have anything to say or suggestions or questions or anything, you can comment. Thank you. Take care. Bye.